the pressure is on. It just shouldn't happen that runs start leaking from the other end because Mir Hamza is bowling brilliantly from one end. You have to keep the pressure on from the other end. This is the point. Absolutely right, Ali. If you leak runs from the other end, you lose the momentum. In the air, in the gap. 4 runs for Tayyab Tahir. Exactly what we were mentioning. Don't leak runs from this end. It was edge, but went quickly from the right side of Fawad Alam. Yeah, every time the ball goes towards that third boundary, the fielder has to go all the way towards the stands and get the ball. Yeah, every time the ball goes towards that third, the ball boy is here at first class level. So it takes a bit of time for the bowler to go all the way towards the stand and get the ball. But it has given us the time. Look at that. He has to go all the way round towards the gate and then again towards the stand. Oh, where did he come out from? Somebody help him, for God's sake. It's under the super sopa. I think this is Saad Khan searching for that ball which he dropped in the slip early. Where is the ground staff? He's found one. Is it the same? Is it the same ball? Is it the match ball? No, it's a practice ball. It is a practice ball. It's not the same ball. Somebody please help him find the ball. The play is stopped due to that. Mir Hamza is there to help him. It's like playing gully cricket. The ball goes to somebody's house. Yeah. And you go there, sometimes jump over their wall and find the ball from there. So many times we've done this. Absolutely. Yeah, we can have a look at the action replay and maybe we can find it from here. Where exactly the ball has gone. Let's have a look. Let's keep your eye on the ball. Where it goes. There we go. No. Lost it. Not really covered in that angle. They can have a breather. Maybe in that Severage line. I hope not. Let me tell you, there are a lot of... 1, 2, they've got many. They've been searching for it, okay. Next time, we can use the other ball for the next time. That's what we used to think when we used to play cricket. If you dig the ground, eventually you'll get the gold. Wonderful, Yasir Hamid. Full of phrases, he's learning. The latest one being, if you dig what? If you dig the ground, eventually you'll get the gold. If you dig the ground, eventually you will dig the gold. That's the you'll get the gold. That's the latest one from our friend Yasir Hamid. Excellent. Back live. Everything is sorted. We are ready to resume the action. We're just on the verge of a tea break here. This should be probably the last over before the tea interval. Just survive. Don't get out. Zahid is persistent with his line and length now. He's offline again. Brush the pad or it was edge. We have to see. Yeah, brush the pad. Leg bias for Central Punjab. 3 runs. 3 runs here. Yeah, good running. Qasim Akram was the one who had to come to the danger end. Just drifting towards leg side, no spin whatsoever. Just brush the pad. It's the runs that matters at the moment, no matter how they come. For Central Punjab, they lead by 119 runs. Enjoying this session, Ali? Loved it. Excellent cricket.
driven. Chance, chance. It has to be out. Oh, is that out? Oh, has umpire given him out? Oh my God, what have you done, Qasim Akram? Against the run of play, you've ran yourself out. He just ran. We're just waiting for the umpire's final decision, maybe. He's just holding up. Maybe Sarfaraz's hands did hit wickets before the ball came. It's going to be very interesting. When you have to get out, you get out like this. Look at that. He just ran. Tayyib Tahir said no. He backed off. I think that's out. Well done, Sarfaraz. What a disappointing way to end this session. Qasim Akram just on the brink of tea break. He ran himself out of 13. He was given an earlier life when the catch was dropped. And look what he has done to himself. There is no point of running. There was no need of that. Not at all. Not at all. But Sindh team will be very happy with their performance and with their plan, especially Mir Hamza. Maybe he come back and he gets some wickets. But absolutely brilliant. Look at the disappointment on the coaching staff, and rightly so. They've lost the wicket on the very last delivery before tea interval. They were looking fine, they were looking good, but just at the end, they've made Sindh come back in this game, courtesy to that wicket of Qasim Akram, who ran himself out. Enjoyable session. Some good bowling by Sindh. After 27 overs, they've got 4 wickets. Only 59 runs conceded. Abid Ali first to go on 12. Then Ali Zaryab. Tayyib Tahir is still batting on 23. Mohammad Saad got a knot. Qasim Akram, recent casualty with his run out. Just excellent. Whenever you look at this Sindh Cards bowling unit, Mir Hamza bowled his heart out for his 10 overs, bowled brilliantly, without a wicket though. Mohammad Umar was consistent also, he couldn't get a wicket. Zaid Mahmood without a wicket, but it was Asif Mahmood's 3 wickets that really dented Central Punjab chances, and they're now struggling at 59 for 4. Okay, let's have a look at what happened in the session. Mohammad Umar started off. Ali Zaryab looked good with his defence. Abid Ali was with him, but it was the line and length. It was this over from Asif Mahmood rattled the stumps of Ali Zaryab. Then Abid Ali played a very careless, casual shot to lose his wicket. This was a wonderful delivery. Runs, Qasim Akram looked positive, played a few drives. Tayyib Tahir also with him. Yeah, and this spell was brilliant by Mir Hamza. Tayyib Tahir with few of his strokes, and this is the last man got out, run out, nicely throw by Asif Mahmood on mid-off. So that's how the match is poised at the moment. Central Punjab 428 in reply, Sindh scoring 368, and now Central in their second inning are 59 for 4. They lead by 119 runs. It's time for tea here at Rawalpindi Cricket Stadium. We'll take a breather. We'll see you in about 10 to 12 minutes.
एक बार फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हाजिर हैं, जहां सेंट्रल पंजाब और सिंध का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज तीसरा दिन है और आखिरी सेशन का खेल शुरू होने को है। आबिद अली 12 रन बना सके, अली जरियाब ने 7 रन बनाए, साद और कासिम अकरम भी उसके बाद चलते बने। इसलिए सेंट्रल पंजाब की टीम इस वक्त दीवार से लगी हुई है। 59 रन पर ये 4 विकेटें गिर चुकी हैं और 3 खिलाड़ियों को आसिफ महमूद ने आउट किया अपने बड़े जारहाना स्पेल में, जो 5 ओवर्स पर मुहित था। जाहिद महमूद लेग स्पिनर्स को लाया गया 4 ओवर्स के लिए, लेकिन मीर हमजा विकेट के बगैर सबसे आला बॉलिंग कर गए। 428 रन सीपी ने पहली इनिंग्स में बनाए। सिंध ने उसका जवाब दिया 368 के साथ। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और फवाद आलम ने सेंचुरियां बनाई और सेंट्रल पंजाब की टीम 119 रन आगे है और उसकी 6 विकेटें बाकी हैं दूसरी इनिंग्स में। तैयब ताहिर ये बड़ी उम्मीद है, अभी तक ये 23 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक पहुंच गए हैं, ये अच्छी खबर है सेंट्रल पंजाब के लिए। इनके हाथ में चोट आई थी कल फील्डिंग करते हुए। पहली इनिंग्स के हीरो 232 रन की ये इनिंग्स जो है ये इन्होंने अभी कल ही खेली है। यासिर हमीद आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में और बड़ा ही दिलचस्प दिन रहा है अब तक। यासिर जी तारिक भाई, बड़ी ऑब्जर्विंग क्रिकेट हुई है जो लास्ट सेशन में हुई है और एक्सीलेंट जो हम कह सकते हैं आला बॉलिंग की है मीर हमजा ने। अगरचे वो ड्राइव किया, गेंद हवा में थी और ये बमुश्किल हाथ की पहुंच से दूर रही। एक मुश्किल कोशिश ड्रॉप की कवर्स के फील्डर ने। पहला बॉल जो फेस किया था अब्दुल्ला शफीक ने, मर्दे मैदान पिछली इनिंग के 200 रन किए, पहली बॉल एयर में खेल गए और एक अच्छी ट्राई की। अगर हाथ में आ जाता बॉल तो एक ब्रिलियंट कैच होता साइम की तरफ से। उमर बिन यूसुफ का शुमार पाकिस्तान में बेहतरीन फील्डर्स में किया जाता है। अच्छी कोशिश थी उनकी। पहली इनिंग्स में सिंध को कैचेस छोड़ने का नुकसान हुआ था। अब्दुल्ला शफीक का 42 रन पर सऊद शकील ने कैच गिराया मिड विकेट पर। बदकिस्मत बॉलर उस वक्त भी जाहिद महमूद थे। जाहिद की गेंद पर फवाद आलम ने एक कैच छोड़ा था अली जरियाब का। लेकिन आसिफ महमूद ने आज के दिन का कमाल स्पेल किया। एक मौके पर 3 ओवर्स में ही 3 विकेटें ले गए थे। जी बिल्कुल तारिक भाई, जो चीज़ पहली इनिंग में ये मिस कर रहे थे दूसरी इनिंग में उस चीज़ को अप्लाई किया। यहाँ बॉल किया आगे की लेंथ रखी, स्टंप्स में ऑफ स्टंप पे बैट्समैन को उन्होंने इनवाइट किया कि वो गलती करें। तीनों बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए। अली जरियाब को भी उन्होंने इसी तरह बोल्ड किया, गैप बना। फिर आबिद अली जो कि अपने जिस्म से काफ़ी दूर खेले, इनसाइड है जो कि बॉल विकेटों को जा लगी। और फिर जो तीसरे आउट हुए बहुत ही अच्छी डिलीवरी पे किया उनको मोहम्मद साद। ये अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद अपनी लाइन को इसने होल्ड किया। अच्छी दिफाई बैटिंग की है तैयब ताहिर ने। आसिफ महमूद ने अराउंड द विकेट शुरू किया बाएं हाथ के बैट्समैन के खिलाफ। बिल्कुल शिराजा बिखर गया। तीनों बार उन्होंने बोल्ड किया बैट्समैनों को। जी तीनों बॉल बहुत अच्छी लेंथ पे गिरे थे। मेरे ख्याल से पहली जो गलती की अली जरियाब ने वो एक बिग मिस्टेक थी। ब्यूटीफुल बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, बॉल पड़ के बाहर की तरफ निकली और तैयब ताहिर को फॉलो करना पड़ा इसको। वो कहते हैं अंदर लाते लाते एक बाहर निकाल दी। जी हाँ, जो है इस बार बाउंस भी मिला। इससे पहले बोल्ड किया है इन्होंने बैट्समैनों को और इस बार कॉट बिहाइंड करने के बहुत करीब आ गए थे। दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की अहलियत रखते हैं। ये अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है पीछे रोकने के लिए। अब्दुल्ला शफीक ने जो पहली
गेंद पर ड्राइव किया, उन्हें न्योता दिया था जब गेंद को फुल फ्लाइट के साथ फेंका जाहिद महमूद ने। तो कई बार जो है बैट्समैन जिसने पहली इनिंग्स में बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई हो तो उसको लगता है कि मैं वहीं से अपनी इनिंग्स शुरू कर रहा हूँ, दूसरी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारिक भाई, और ये एक नेचुरल एक फीलिंग होती है बैट्समैन की कि मेरी हर शॉट लगेगी, लेकिन उसको दोबारा अपने शेल में आना पड़ता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डर को थोड़ा सा मौका दिया था कि वो उन्हें रन आउट कर सके, लेकिन जाहिद महमूद स्पेल कर रहे हैं जो कि थोड़े थके भी लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग्स में सेंचुरी या डबल सेंचुरी बनाई हुई है तो ज़ाहिर है वो जो सरशारी का एहसास है वो जाता नहीं है, वो एक हैंगओवर होता है। ये अच्छा शॉट, कवर ड्राइव है और 4 रन्स मिलकर रहेंगे तैयब ताहिर को। ज़्यादातर रन्स ये ऑफ साइड में स्कोर के पीछे बनाते हैं, लेकिन ये लाजवाब था सामने। जी अच्छा शॉट, आगे घिरा हुआ बॉल और सिर्फ अपने रिस्ट को भी ब्रेक किया। अगर आपने देखा तो हाथ तो अच्छे इस्तेमाल किए, थोड़ा सा रिस्ट वर्क भी था इस शॉट में, जो कि ड्राइव्स में बहुत कम देखा जाता है। अट्ठाईस ओवर्स के बाद 65 पर 4। ऑफ साइड में अच्छी खासी फील्ड है इस वक्त अब्दुल्ला के लिए, इसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। रन्स मिलेंगे, गेंद नहीं पहुंचेगी बाउंड्री तक, इसलिए तीसरे के लिए भी लौट जाएंगे। रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है सेंट्रल पंजाब को, अगर उनने इस खेल में अपने लिए उम्मीद रखना है, क्योंकि सिर्फ अगर ये डेड बल्ले से खेलते रहेंगे तो ऐसे में किसी भी वक्त वो गेंद आ सकती है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ हो, क्योंकि ये पिच ऐसी है स्पिनर की गेंद भी अचानक उछल सकती है आपके सामने से। जी तारिक भाई, लेकिन अब अब्दुल्ला आए हैं क्रीज पे। अब आप जिस तरह के ये प्लेयर हैं तो आप एक डिफरेंस देखेंगे, एक जो प्लेयर्स खेल के गए हैं और अभी ये आए हैं, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे कि इनकी और उनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। वाई ही इज़ गुड, वाई इज़ गेटिंग रन्स, क्योंकि ये बैट बॉल को जाने नहीं देंगे। इस वक्त खासी तेज़ हवा चलने लगी है। जाहिद महमूद जो एंड है, जाहिद महमूद का वो भी मुख्तलिफ रखा है। पहली इनिंग्स में इन्होंने मीडिया सेंटर एंड से स्पेल करते रहे थे, दोनों दिन आज फ्लाइट दे रहे हैं और आ रहे हैं पवेलियन एंड से। कम कम हम देखते हैं पिंडी में पवेलियन एंड से स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए। शाबाश जाहिद भाई। अच्छा बॉल जाहिद का, उतना ही अच्छा डिफेंस अब्दुल्ला का। उम्मीद रखनी चाहिए कि इनके जो हाथ की चोट है वो मुंतमिल हो गई होगी। आज फील्डिंग करने के लिए नहीं आए थे और बैटिंग करने के लिए भी देर से आए। अब्दुल्ला शफीक कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद का दिफा किया। 69 पर 4।
ये अच्छा खेल रहे हैं। तैयब ताहिर जो हैं गेंद को अपने करीब आने दे रहे हैं और एक जो पुरानी एक नसीहत हम सुनते आए हैं बैटिंग के लिए कि गेंद जहां पर स्विंग हो रहा हो वहां उसे जल्दी देखना और देर से खेलना चाहिए बैट्समैन को। वही करने की कोशिश की है तैयब ने अब तक। जी बिल्कुल सब्र से खेले हैं, अपनी शॉट्स भी रोकी हैं इन्होंने और बर्दाश्त की है कुछ। फिर बैकफुट से खेलने में कामयाब हुए। दूसरे रन के लिए पहुंच जाएंगे। फील्डर को दबाव में लिया था। प्रेशर सिचुएशन को इन्होंने अच्छा हैंडल किया था तैयब ताहिर ने। ये देखिए बैकफुट पे, हालांकि पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे, बट उन्होंने मैनेज किया इसको, मिडल करके 2 रन लिए। हाँ अच्छी डिलीवरी थी, फ्रंट करने पे मजबूर किया क्योंकि एक कवर ड्राइव भी किया था और अगले कदम पर भी खेलने की कोशिश कर रहे थे तैयब ताहिर। देखिए अगर आप इनकी मूवमेंट देखें तो पहले आगे जा रहे थे फिर पीछे आए, बट अच्छा कदमों का इस्तेमाल। वेल प्लेड इन द एंड वी वुड से। यासिर मैं चाहूँगा कि ज़रा रोशनी डालिएगा। कहा जाता है कि फास्ट बॉलर को जब आप खेलते हैं तो आपको पहले उसकी लाइन पिक करनी चाहिए। स्पिनर जो हैं उनको आमतौर पर खेलते हुए आप जो है लेंथ को पहले देखने के लिए जाता है। बैट्समैन को पहले लेंथ पिक करना पड़ती है। तैयब ताहिर इससे मुख्तलिफ हैं। नहीं देखिए, अगर हम इस वक्त अगर बॉलर को भी देखना चाहिए कि बॉलर कहाँ पे बॉल करता है। इस दफ़ा प्ले एंड मिस। तैयब ताहिर ये कट शॉट खेलते हैं लेकिन इस दफ़ा मिस किया इस मौके पे। अगर आसिफ महमूद को देखें तो उन्होंने अपनी सारी बॉलिंग का उनका जो महवर था वो आगे था, पीछे बॉल बहुत कम किए इन्होंने, तो इसलिए तैयब ताहिर पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उनको आगे खेलने का। मेरे ख्याल से ये दिस इज़ नॉट अ राइट वे। पहले से प्रीएम्पशन नहीं है क्रिकेट। यू हैव टू बी वेरी स्टिल और वेट करना चाहिए आपको। इस बार लेंथ कम थी और बैकफुट पर जाने का मौका मिल गया। 4 रन मिल गए। हालांकि गेंद स्लिप्स के कॉर्डन से गई लेकिन पूरी तरह इख्तियार में थे तैयब ताहिर। इस ओवर में उन्होंने 6 रन बनाए 75 पर 4। कट शॉट खेले और अच्छी बात कि नीचे खेले। लकी रह के ऊपर नहीं गया बॉल। ये बॉल ऊपर भी जा सकता था लेकिन वो चूंकि इस वक्त 69 बॉलें खेल चुके हैं 35 रनों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट हो चुके हैं अभी। बैटिंग कार्ड इतना अच्छा नहीं है सेंट्रल पंजाब के लिए। 75 पे 4। देखना ये होगा कि ये दोनों बैट्समैन कहां तक जाते हैं। एक और शानदार शॉट, एक और चौका। इस बार अब्दुल्ला शफीक एक्शन में आए, भरपूर फॉर्म में हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले इस पूरे मैच में ही अब्दुल्ला। बहुत खूबसूरत शॉट। देखिए स्ट्रेच करके और बॉल की पिच पे पहुंचे और खूबसूरती से मिडल किया इसको गैप में। ये बात तारिक भाई मैं कर रहा था कि डिफरेंस यहां पे नजर आएगा। और मुझे वो ये शॉट देखकर
वो थोड़ा सा मैं पीछे चला गया हूँ आपसे। कोई 17-18 बरस पहले यहाँ टेस्ट मैच हो रहा था। दानिश कनेरिया जो हैं वो इसी एंड से बॉलिंग कर रहे थे, राहुल द्रविड़ को इसी तरह के स्ट्रोक्स लग रहे थे उस इनिंग्स में। और उसकी जो बड़ी वजह थे वो हमारे साथ हैं, यासिर हमीद। राहुल द्रविड़ एक अजीम खिलाड़ी थे। अगर वो दानिश कनेरिया को खेल रहे हैं तो इसमें मेरी वजह कहाँ से आ गई? यहाँ मोहम्मद शमी जब उससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, उससे बहुत पहले तो यासिर हमीद पॉइंट पर थे, तो कट किया राहुल द्रविड़ ने और यासिर हमीद जो है वो नहीं संभाल सके थे उस गेंद को और फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो गई थी। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ हुआ क्या था। राहुल द्रविड़ 70 पे खड़े थे और पॉइंट पे मेरे पास कैच आया, राइट साइड पे था और वो मुझसे ड्रॉप हो गया क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया। अगर हम देख सकें शोएब अख्तर स्टैंड अगर हमें दिखाया जाए प्लीज। एक और अच्छा शॉट, ये शोएब अख्तर स्टैंड की तरफ ही ये शॉट खेले थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन रास्ते में हायल हुए। इसके ऊपर लगे हुए थे तंबू, वो भी लाल रंग के, और बॉल जो है उसमें बिल्कुल गायब हो गया। ट्रस्ट में मुझे नज़र ही नहीं आया कि बिल्कुल वो आखिर में मुझे पता चला ये तो इधर है। मैंने फिर हाथ उसको दे दिया था, तो थोड़ा राइट साइड में था, बिल्कुल सीधा भी नहीं था, बट दैट वाज अ बिग मिस। नहीं ठीक है। और उस पर फिर राहुल द्रविड़ ने 270 रन किए थे, कितने 274। चलिए अगर राहुल द्रविड़ ना करता तो उनकी बड़ी लंबी बैटिंग लाइन थी, कोई और कर जाता। लक्ष्मण भी थे उसमें और सचिन तेंदुलकर थे, गंगुली थे। नहीं, जाहिर है कि जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो हो जाता है, जब पस मंजर में आप गेंद को खो देते हैं। मैं खुद मुझे बहुत अफसोस हुआ था उस कैच के ड्रॉप करने का, बट क्रिकेट में आपको पता है हो जाता है, ये कैचेस होते हैं ड्रॉप। जी हाँ, ये भी खेल का हिस्सा ही है। वजह मैंने आपको बता दी है, बाकी इंसाफ आपने करना है। नहीं बिल्कुल जो है ये तो मोहम्मद शमी से आपको ये मोहम्मद शमी को आपको जवाब देना चाहिए। वैसे इंसाफ यहाँ कम ही मिलता है, बट अल्लाह इंसाफ करे, बट आप खुद फैसला करें। लाल तंबू पीछे और लाल बॉल, ये खेल का हिस्सा है यासिर, और जाहिर है लाइटर नोट पर नहीं बात बिल्कुल। हुई थी और अब तो जाहिर तारीख का भी हिस्सा बन चुका है। यासिर जो हैं पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी थे, ओपनिंग बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक के हाथ में ये झटक रहे हैं, बार बार तकलीफ का एहसास है, और अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो क्या इन्हें खेलना चाहिए इतने अहम सीजन से पहले, अगर टेस्ट के लिए टीमें आने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट मे बी उनकी इंजरी इस नोयत की ना हो। हाँ अगर स्टिचेस आए तो फिर नहीं खेलना चाहिए। फिर तो मेरा ये मशवरा है कि ना ही खेले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी आ चुके हैं, ये देखें वेबिंग पे, ये आपके अगर स्टिचेस एक दफ़ा खुल जाएं तो दोबारा खुलते रहते हैं, अगेन एंड अगेन। ये मेरी 3 दफ़ा ये इस पे मेरे स्टिचेस खुले हुए हैं, तो ये बड़ा एक हसास जगह है ये। उनके स्टिचेस तो नहीं है, आई गेस स्टिचेस तो नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये कल जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे तो साइम अयूब का एक कैच पकड़ने की उन्होंने कोशिश की थी और ये गेंद पैड को लगती हुई गई। सरफराज अहमद अच्छा गेंद तक जा पहुंचे, अच्छी विकेट कीपिंग फॉर्म दिखाई है सरफराज अहमद ने। दोनों तरफ जो है डाइव करते हुए नजर आए अब्दुल्ला शफीक। देखिए जब भी ये गेंद को खेलते हैं तो इनका हाथ जो है, निचला हाथ जो है हट जाता है हैंडल से, उससे जाहिर हो रहा है तकलीफ है। जी बिल्कुल जाहिर हो रहा है। और
डेफिनेटली है। अब देखना होगा उनको बॉल लगा कहाँ पे है, और इंजरी हुई तो हमें पता है स्लिप में थी। बॉल जो आगे गिरता है उसको अक्सर इंजरी का शिकार हो जाता है बैट्समैन, फील्डर उस बॉल पे, तो बड़ी ध्यान से फील्डिंग करनी चाहिए ऐसी बॉल पे। हालांकि अच्छे स्लिप फील्डर हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, टेस्ट मैचों में भी उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े। ये अच्छा शॉट था ऑफ द टोज, एक और टिपिकल अब्दुल्ला शफीक का फ्लिक शॉट, और उसमें उन्होंने 3 रन और पाए कि इनको दोनों तरफ मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। ये एक और क्वालिटी शॉट अब्दुल्ला शफीक का, जो हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े इक्विप्ड हैं और उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि जो बैट बॉल होता है वो ऑटोमेटिकली उसको वो बाउंड्री पे पहुंचाते हैं। ये देखिए इनका जो सर है वो फॉल ओवर बिल्कुल नहीं करता, और यही ज़रूरी होता है इस तरह के स्ट्रोक्स में। ये कामयाबी का राज होता है कि आपका सर जो है गिरना नहीं चाहिए ऑफ स्टंप की तरफ, वरना गेंद पैड पर लग जाएगी। जी हेड पोजीशन तो की है बैटिंग में, और इसमें अब्दुल्ला शफीक मास्टर हैं। अब्दुल्ला शफीक का बहुत मजबूत दिफा है और वही इनको एक कामयाब ओपनर बनाता है। हमने जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स देखे हैं तब जिन्हें हमें देखने का इत्तेफाक हुआ, जो सुनील गावस्कर और गॉर्डन ग्रीनिज, उनसे ज़ाहिर के बेहतर ओपनर्स जो हैं पिछले 50-60 साल में टेस्ट क्रिकेट में पैदा नहीं हुए। और दोनों की खूबी ये थी कि एक तो तवाज़ुन अच्छा था और दूसरा उनका जो दिफा था बेहद मजबूत, शीशा पिलाई दीवार की तरह होता था। ये बिल्कुल अपने फर्स्ट इनिंग में जिस तरह आउट हुए थे उसी तरह का कोई इरादा रखते हैं। फंस गया था बॉल हाथ में। अगर अब्दुल्ला शफीक जितनी देर खड़े रहेंगे, प्रेशर जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सिंध की तरफ, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप इनको ऑफलाइन बॉल करें। दे विल डेफिनेटली पुट यू अवे विद रन्स। 3 ओवरों में 14 रन बने अभी तक। तारिक भाई, यहाँ ये पाँव पर लगा था और वैसे भी गेंद जो है बल्ले के फेस से आई थी, तो कभी भी आसान नहीं होता शॉर्ट लेग के फील्डर के लिए, क्योंकि ये जो फील्डर है ये बैटिंग पैड के लिए खड़ा किया जाता है, और अगर गेंद पूरी तरह बल्ले के फेस से आई है, आप कैच कर लेते हैं तो वो एक बोनस है। जी जिस तरह पहले इनिंग में किया था अली जरियाब ने, किसका कैच? हाँ वो तो साइम थे ना। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 33 ओवरों के इख्तिताम पे 84 पे 4। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। 144 रन की बढ़तरी है सेंट्रल पंजाब को। अली शान, आमिर यामीन आने वाले खिलाड़ी हैं। टेल के लिए यहाँ बैटिंग करना इतना आसान नहीं है इस पिच पर, हमने यही देखा है। दोनों टीमों की जो टेल थी वो बड़ी जल्दी सिमट गई और इसलिए जो
स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इन हालात में। जी बिल्कुल, इस पेयर के बाद अली शान हमने कभी उनको बैटिंग करते मैंने देखा नहीं है, बट आमिर यामीन एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कुछ रन्स कर सकते हैं, और उसके बाद फिर टेल शुरू हो जाएगी। आपने सही बात की तारिक भाई, फिर उसके बाद इस पिच पे टेल के लिए रन्स करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये 150 और 60 रन्स की लीड, 220 प्लस के रन्स जो हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा फिर। जी हाँ, क्योंकि आज मोहम्मद अली ने जो स्पेल किया, उसके बाद सेंट्रल पंजाब को भी एक उम्मीद रहेगी। हालांकि सिंध की बैटिंग बड़ी मजबूत है, ये अच्छी टीम है सिंध की। इनके पास लेग स्पिनर है, इनके पास बाएं हाथ का एक स्विंग बॉलर है, और आसिफ महमूद ऑलराउंडर हैं, मुख्तलिफ तरह के बॉलर हैं, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करते हैं, और मोहम्मद उमर जो हैं ये कंट्रोल देते हैं। चौरासी पर 4 विकेटें गिरी हुई हैं, और रन बनाने की औसत जो है वो खासी कम है, क्योंकि विकेटें गिरती रही हैं। 2.47 रन बनाने की औसत है, और इन 4 रन के बाद यकीनी तौर पर इसमें इजाफा होगा। अब्दुल्ला ने बड़ी जल्दी अपनी कलाई को गिरा दिया था, सॉफ्ट हैंड से उनने खेला, क्योंकि गेंद ज़्यादा फाइन ना जाए, ज़्यादा उछल कर ना जाए। जी बिल्कुल, और इंटेंशनली खेला, ये शॉट है उनकी, 4 रन हासिल किए। यहाँ इस वक्त कदरे हम कह सकते हैं इत्मीनान का एहसास है सेंट्रल पंजाब के इस खेमे में। और अब्दुल्ला शफीक जो हैं, ये वैसे भी जब बैटिंग कर रहे हों तो एक इत्मीनान रहता है टीम को। ये जो है बहुत पहले मुकाबला खेला गया था, यासिर हमीद की इससे बहुत अच्छी यादें वापस हैं। जी बिल्कुल, ये तो मेरा 1999 में कायज़म ट्रॉफी का मैच था, पेशावर वर्सेस रावलपिंडी, और ये तो मेरा यादगार मैच है, क्योंकि इसमें मेरा पहला 100 था, फर्स्ट क्लास की पहली 100, और सेकंड इनिंग में मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ये यही बता रहे हैं 81 भी मैंने किया था। जी हाँ, क्योंकि यासिर हमीद जो हैं इनका और इसमें शाह फैसल भी थे, शाह फैसल भी खेल रहे थे हमारे साथ। ये मुनफरिद रिकॉर्ड है यासिर हमीद का, कि पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई, पहले फर्स्ट क्लास मैच में भी सेंचुरी बनाई। पहली सेंचुरी थी पहली फर्स्ट क्लास में जी। पहले फर्स्ट क्लास मैच में तो ना ही पूछे तो क्या हुआ था। लेकिन पहले जो आपका पहला सीजन था कराची में, जो है फाइनल में सेंचुरी बनी, फाइनल में डबल सेंचुरी बनी। जी हाँ, तो वो एक दिलचस्प रिकॉर्ड था कि नेशनल स्टेडियम में ये फर्स्ट क्लास में जब पहली बार खेले थे तो 0 पर आउट हुए थे, टेस्ट मैच में जब पहली बार खेले थे तो सेंचुरी कर गए थे, बल्कि 2 सेंचुरियां कर गए थे। तो ये करामत कैसी लगी आपको? अल्लाह ताला का करम है। 90 4 विकेटों के नुकसान पर।
They say, Shah Faisal, the best defense is to attack. And that is what has been the strategy from Central Punjab. Look at that. The intent is quite clear. They're going to go after this bowling lineup. That is the right way to go. Because we felt that just before that last session, they were too defensive, they were too cautious. They lost their wickets, but they stopped too many shots. This is better from Central Punjab. Right, runs are very important. Like we said many times before, the third innings is very vitally important. Excellent piece of fielding, brilliant. This has been an exhilarating passage of play. The fight has been intense. Both the teams are really fighting hard, not giving an inch. This is just the first game of the Quaid-e-Azam Trophy. And we're already loving it. It's just been brilliant, this game. The pendulum swung both ways. That's runs. 1, 2, 3, 4 of them. For once, Zahid Mahmood strays, and Abdullah Shafiq wasn't going to let him go unpunished because it was a freebie. And Abdullah is quite proactive, just using the pace of the ball way outside the leg stump. No protection for Zahid. Easy pickings, Abdullah Shafiq. Yeah, even the half-fit Abdullah Shafiq is working for Central Punjab. Since the time that he has moved in, it has all changed. He's free. He's showing others that how to play. That is what you do as a senior pro in the team. He's the test opener, compact, technically correct, very patient, very beautiful. It's beautiful to watch, no doubt about that. Coming back to your point about the intent and the run scoring, Ali, like I was saying, third innings is important because sometimes you don't know which way you want to go. You want to occupy the crease or you want to go for runs. Central Punjab, for a moment it felt they didn't know where they wanted to go. But ever since Abdullah Shafiq's come on, look at his strike rate, 21 of 27. The partnership is already 36 of just 48. And those important runs have propelled their lead up to 155 now, which is vitally important. Yeah. Interesting tactics by the captain Saud Shakil is kept that leg slip. Just because Zahid Mahmood was bowling towards his leg side and he's not 100% fit, his main hand, the left hand, is injured. And that's what he's talking. He's been good as a captain, Saud Shakil. He's a youngster, first time captaining this huge side. And he's been getting the results, won that National T20 Cup. Definitely the flag is flying high. They won the National T20 Cup. They're looking good here also. Yeah, they are. The bowlers responded beautifully after conceding that lead of 60. Immaculate lengths from all the three seamers. Although Asif picked up the results, but Hamza and Umar played their part. You got to give the credit to Tayyib Tahir also. He's held one end together. 75 deliveries, very unlike him. We know he's a dasher, he likes big, he likes to go hard at the bowlers. But this situation demanded a different Tayyib Tahir. And he has provided that. Stability from one end. And now since the time Abdullah Shafiq has come, runs have come easy from both ends. This is what one good batter can do. Important contribution, Tayyib Tahir. Because like he said, wickets were flying all around him. He just stood one end firm. And he's shown this side of his game before, last year as well in first class cricket. He showed on some tricky pitches that he has the ability to hang around. And we all know that he has the strokes, but he's pretty compact as well when he needs to be. And this is an important partnership. Because after this, we got Ali Shan and Amir Yamin, the all-rounders. It could really go south very quickly for Central Punjab if one of these two get out. Absolutely. You're at that time in the match. That's a good ball. Now this can go either way. Couple of quick wickets for Sindh. They are top. Quick men, because when they find an edge, it is hard to do that.
But if it doesn't carry, it really breaks their heart and their effort as well. But on this pitch, it hasn't been the case. Edges have been carrying to the slip. Yeah, you make a good point. This pitch has something for everyone, other than us. Something for everyone. What do you want, Ali? What do you want for yourself? I've got what I wanted. I wanted a good game. I'm witnessing it. Just didn't want that one-sided game when you've got long runs from one side and the other sides to keep on struggling. That gets boring sometimes. And at the start of the season, from the first game, this is what you wanted to see, the competition. At one point, Central were at the top, then Sindh was on the top, then Central again on top. Excellent. It's been a great contest, no doubt about it. And the contest between bat and ball as well is a fair reflection. Like you said, it has a little bit of something for everyone. Spin will come and play its part in the remaining part of the game as well. There you go. That's the bounce that I was talking about. Sarfaraz was really taken by surprise. Umar has toiled hard. Another good over. Yeah, he's been unlucky. He's been very consistent with his line and length, and again that kicked on a little. But it was a very careful, very cautious leave by Abdullah Shafiq. Central leading by 156 runs. Just carrying on about the contest. I do have a feeling that Zahid Mahmood will have a say in this game as well. It's the final session of day 3, and the wrist spinner can always come to the party. Beautiful weather as well, especially in the evening in the third session. It cools off a little bit. Gentle breeze, clear blue skies. And quality cricket. All in one. That's what we expected from Rawalpindi, to be honest. And it has delivered. This game will go right down to the wire. Abdullah Shafiq looking around the field. That cover fielder has been straightened up a little bit, because that's the gap he was finding. Yeah, he's looked positive with his intent. Although half fit, but still he's always searching for the runs. Very quality batter, I tell you. And the leg slip that we saw for Abdullah Shafiq goes to short leg for Tayyib Tahir. Interesting to note as well that Zahid was bowling from the media center, and on the first day he did get a little bit of extra bounce bowling from that end, but now he's bowling from the pavilion end. Kept slightly low. He's been very careful. Tayyib Tahir lost his wicket to an average shot in the first inning. He's learnt. Because he's probably realized that this is the format that he needs to go big. This is where he needs to prove himself. That is how he got out in the last inning. The first one of this match. Reckless, lazy, you can call it whatever. But he's learnt, he's come back, he's looked solid. He's been there for the team. Excellent work once again. Sindh has been doing pretty well in the field. That's Saad Khan. He's been excellent along the ground. Yep, just one drop catch by him, that of Mir Hamza. Other than that, he's been superb. Leg side-ish again. These are easy pickings. They are very strong at leg side. Both of these batters, Abdullah and Tayyib Tahir, will get a couple of runs. That is the end of another over. Central Punjab has reached their 100 after losing 4 wickets.
Talking about Zahid bowling from the right end in the last over. Look at the breeze, but this is the scorecard. 42 for Tayyab Tahir. He's fighting hard. Abdullah Shafiq. These two have strung a good partnership together. 41 of 61. The 31 overs left in the day's play. This is the breeze I was talking about. Zahid is bowling from the pavilion end. And there it was. Lucky that he didn't time it well. Good running also. 2 runs for Abdullah Shafiq. Not a dull moment in this game. The intent is there. Umair bin Yusuf very quick across the turf. It was in the air, but in the gap. They've got a fielder placed there, that short point. Saim Ayub is rightly placed there for this mistimed shot. That is good cricket. Good captaincy also by Saud. Solid. I like this boy. So pleasing on eyes. Abdullah Shafiq. It's definitely, if you look around Shah Faisal, if you compare the openers in Test match cricket, look at that defense. Picture perfect. Yeah, I was talking about the openers around the world. There are not many solid openers in Test match cricket that we talk about. You think he's one of the best there in top 3 in terms of his defense? One thing is for sure, Pakistan has found an opener like him after a long, long time. He's so compact, and even in defense, he looks so pretty. Just blocking the ball, even the last one, when he played it right under his eyes. You use the right word, picture perfect. His forward defensive stroke is a picture. It says a lot. In this day and age, Compare the openers. Let's English, Australian, nothing, Indian, nothing, Sri Lankan, nothing. sweeping straight. Beautiful. For no runs. Sometimes as good a stroke as it was, it deserved more. But Umair bin Yusuf has been brilliant in the field. You make a point about openers, especially not a single 20-year-old of this pedigree and class. Even if you look around the world, you're absolutely right. We know that English openers, they're still looking for a solid opening pair. Chopped and changed a lot. David Warner still there for Australia, but he's not young anymore. Yeah, Dean Elgar from South Africa. He's solid. Couple of Indian, KL Rahul, Rohit Sharma maybe. But I'm talking about the real solid technique. Yeah, there's, in terms of being solid, there's Pujara, but he plays at number 3. We're talking about the openers here. So, yeah, Karunaratne from Sri Lanka. There are very few. That's why I say I will rank him right there, right up there in top 3 in terms of the defensive technique. Abdullah Shafiq. And he's just starting up his career. Yeah, that definitely does put him in an elite category, because he's, like I said, only 20 years of age, just starting out. And he's so mature for his age. He just loves batting. And in the first innings, he proved that. Look at some of those strokes. Delectable off the back foot, using the pace and bounce, getting on top of the bounce. This one's tricky, but you need that as an opener. And the good thing is, he was ready to put away the bad balls. Whenever they came, he was ready to pounce on them. Equally good against pace and spin. Magnificent.